Hello students, let's start the study of Social Science Standard 6. Lesson number 5, Earth, our home. Yesterday we discussed the first page, right? I told you to gather the information about these astronauts that you have to find out from the Google and collect the information of these three astronauts. Okay, let us continue with the next page. Here there are some figures given. Identify the given figures. If it is necessary, take your teacher's guidance. Here there are some figures drawn. The first figure is, this is the figure of Earth, and this line, this imaginary line is called latitude, and it is the equator. This line divides the globe into two parts. This is a figure of globe, and this horizontal line equator is divide the globe into two equal parts. The upper part of the globe, which lies to the north, this is north side and this is south, right? So the upper part of the globe which lies to the north of the horizontal line is called northern hemisphere. It is called northern hemisphere. And the lower part of the globe, which lies to the south, this is south side, right? So the lower part of the globe which lies to the south of the horizontal line is called southern hemisphere, right? Now in the next figure there is a figure of globe, and there are two lines, two dark parallel horizontal lines are given, and this line is called, this line on the north side is called Tropic of Cancer, and the south side, the dark parallel horizontal line is called Tropic of Capricorn. Again see the third figure. Here the horizontal line which divides the globe into two equal parts is called equator, and the dark parallel horizontal lines in the north pole and south pole. In the north pole there is a dark parallel horizontal line is called Tropic of Cancer, and this is the Tropic of Capricorn, and this is north pole and this is south pole. In the next figure there is equator in the middle of the globe, and in the south side there is a Tropic of Capricorn. And in the last figure you can see there is a picture of globe, and here in the middle line is called equator. On the north side, upper side, there is a north pole, in the lower side there is south pole, and this part is called northern hemisphere. The upper part of the globe is northern hemisphere, the lower part of the earth is southern hemisphere. Okay, now here take a globe and flash the light of a torch on it and from a distance as shown in the figure, and note the observation. If you have a globe, just take a torch and flash the light of a torch on it. Okay, do the experiment at your home if you have a globe. Now observe the answer. Imagine that this is a picture of globe. Now which latitude receives maximum light? If you light a torch on the globe, which latitude receives maximum light? Imagine that this is a globe and the torch of light flash the equator, right? So which latitude receives maximum light? Between ये जो यहाँ पे इक्वेटर दिया गया है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉर्थ और साउथ साइड जो 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और 23.5 डिग्री साउथ में है। तो यहाँ पे जो सनराइज है वो डायरेक्टली यहाँ पे सनराइज होता है, तो यहाँ पे जो हीट का प्रमाण ज़्यादा होता है, मैक्सिमम लाइट्स यहाँ पे मिलती है। तो विच लैटिट्यूड रिसीव्स मैक्सिमम लाइट्स, तो बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ये जो बीच का जो पार्ट है वहाँ पे मैक्सिमम लाइट रिसीव होती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है विच लैटिट्यूड्स रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइट, तो यहाँ पे जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में ये यहाँ से ये जो 90 डिग्री तक यहाँ पे है, 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में। तो यहाँ पे 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ पोल में और 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक साउथ पोल में यहाँ पे एकदम से लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव होती है, बहुत ही कम लाइट रिसीव होती है। नाउ विच लैटिट्यूड रिसीव्स एवरेज लाइट, ना ज़्यादा ना कम, विच लैटिट्यूड रिसीव्स एवरेज लाइट, तो बिटवीन 23.5 डिग्री टू 66.5, ये जो पार्ट है नॉर्थ पोल में और यहाँ पे साउथ पोल में 23.5 से 66.5 लेके यहाँ जो नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जो पार्ट है वहाँ पे एवरेज लाइट रिसीव होती है। Now name the countries which receive light from the torch. If you have torch and if you will experiment this globe with torch, okay, now find out the name of countries by yourself. Okay, let's see the next paragraph. The earth is divided into various zones according to the temperature and the heat of the sun, and these zones are called climatic zones or heat zones. The earth divided into various zones, यहाँ पे आपको दिखाई देता है torrid zone, temperate zone and frigid zone in the north pole and same as in the south pole, right? There are 3 zones. The earth is divided into 3 zones: torrid zone, temperate zone and frigid zone. Now the figure 5.4 shows the climatic zones. यहाँ पे ये जो फिगर दी गई है 5.4, ये क्लाइमेट जोन्स है। तो ये जो फिगर है उसमें हमें दिखाई देता है क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ। वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 जोन्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव। किस जोन में कितनी हीट रिसीव होती है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन से देखा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, कहाँ पे कम और कहाँ पे एवरेज, राइट? तो यहाँ से वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 जोन्स: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगिड जोन, according to the amount of heat received. Okay, now you have to draw this figure in your notebook, right, properly. Okay, now today I am going to end my session here. Thank you.